7 और 8 एपिसोड कैसी लगी आखिरी बार की आपको? मैंने ऑब्वियसली पिछली सारी देखनी पड़ी टू कम टू द 7 and 8 एपिसोड. आई थिंक आई लाइक द स्टोरी. जो शुरू में जिस चीज़ के बारे में मैं सोच रही थी कि ये इस पे ज़्यादातर होगी, आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज बाय द टाइम आई केम टू दीज 2 एपिसोड्स के स्टोरी इज़ गॉट 2-3 डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग इन इट. एक तो ऑब्वियसली इनका रिलेशनशिप है, फिर बच्ची और इसका जो बहुत अच्छा जा रहा है, द न्यू मदर, व्हाट इज हर नेम इन इट? शाहिरा जलील. नहीं, द ड्रामे में गौहर और उसका, एंड देन द ड्राइवर who is probably the most interesting character in, so good. And he's doing such a great job because remember in Romeo he was the ashik of the puppy or the yes remember yes. And he was this very sweet Maiman guy, you know. Napa graduate. He's so good, so good. Meaning वो जो scenes उसके घर पे and with his the wife was also good. Wife के साथ, you know, those were so. एक तो he did it very well without showing violence in that sense. The child's reaction of, you know, I just think though that part of it was very good. और फिर अभी जो है ना हम लोग, if you notice, we don't really write about. Hasina Moin always had a story about, you know, parallel stories चलती थी जिसको हम upstairs downstairs कहते थे, या Downton Abbey. You know, there was the मालिकान की story and then there was the नौकरों की कहानी, और उनकी कहानियाँ चलती थी. This I really like that about it, कि there is that side of the story also, because उसके what kind of a person he is and all that, and I think उसका effect अब इधर आएगा, you know. So I really like that. Plus एक बहन का नया एंगल जो मुझे शुरू में इतना नहीं लगा कि she's so desperate to have a child, and that angle is also suddenly come out, and you know, to the point that she wants to take her own life because अब पता नहीं how many times she's tried or whatever has happened. So I enjoyed it. So I'm going to give it one thumbs up. Writing की बात करते हैं रिदा बिलाल. मरीना जी. I like the story. The story is very good. What a terrible statement. I like the story. The story is very good. Anyway. वायरल है ना, वायरल. वो जो होता है ना 3-4 दफा आपको मारा, आपको चपेट मारी है. जजेस गुस्से से भर गए. मुझे ये सोशल मीडिया की बहुत खुशी हो रही है. तैयार हो जाओ तुम. कि मरीना खान अपने मुंह पे खुद थप्पड़ मार रही है. क्या वायरल क्लिप है. मैंने कि इस महीने ना 30 मिलियन पक्के हैं. मरीना खान ने अपने मुंह पे थप्पड़ों की बरसात कर ली. जज ने अपने आप को ही मार दिया. So within a household, आप बता रहे हो कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ना. नॉर्मली हम लोग एक बड़ा एक सिंगल ट्रैक लेके चलते हैं कि एक बहू बाहर से आ गई, अब उसके साथ जुल्म होना है. यहाँ ये नहीं. यहाँ ये आई है, वो कैसे सब घर को संभाल रही है. बंदा जो है, he is not against her, but he's not in favor of her also, and how slowly he starts turning. It is a little slow in the beginning because उनकी relationship का, you know, because वो बीवी को constantly mention करता है, लेकिन और इसका बुरा भी, मीनिंग वो कह भी रही है कि आप कर सकते हैं, लेकिन अंदर से उसको बुरा भी लगता है. बट उसके बावजूद बहन का जो एक पूरा ट्रैक चल रहा है, ड्राइवर का जो एक पूरा ट्रैक चल रहा है, क्या कहते हैं, ड्राइवर के घर में वो जो पूरी जो दैट होल सीन ऑफ वायलेंस, द काइंड ऑफ पर्सन ही इज़, जो ये फील कर रही है, और ये ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती बिकॉज ये नई आई है इस घर में, और ड्राइवर उसको बता भी रहा है कि आप मुझे नहीं जानती, आप तो नहीं है. और एक वे से जब वो उसको डांट के कहती है ना कि तुम इधर आ जाओ, when she is sitting with him and playing the game, he sees her come, you know, when she's coming back after dropping her to school, he sees her coming, but then he just goes back to the game, you know, like little things. And ये सिर्फ ये नहीं है कि आप domestics के साथ है, ये आपका एक overall है, because child is very innocent. उसको गुड और बैड और इवल का बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं होता. तो दिस इज़ अ लवली वे ऑफ टेलिंग ऑडियंसेस, या अगर आप एक मैसेज अगर कि हाउ यू कैन बी केयरफुल अबाउट इट, हाउ यू नीड टू टीच
your children about the good touch, bad touch, no. And it doesn't necessarily mean domestic. It can be anybody, because we know that a lot of the times when rape happens, it happens to girls who the person, they knew that person, you know, a lot of the time. So it's either a family member, or it's somebody from, you know, the neighborhood, or it's a, you know, a distant family person. Not necessarily all the time, but that's what. So I think ये सारे subjects लेके एक घराने में जो हो रहे हैं, I think it, मुझे लगता है आगे जाके काफ़ी complications होगी, especially now that she's pregnant. Because अब मुझे लगता है जो इनकी relationship इतनी beautifully has come together, is going to have problems, because he's going to go through the same nightmare that उसकी first wife के साथ हुआ था, because he lost a child, he lost his wife because of a child, and now he's invested himself all over again after so many years in another woman, and मुझे लगता है कि अब फिर से conflict आएगा. मुझे लगता है बच्ची का भी थोड़ा सा एक jealousy, and you know, so I am seeing a lot happening. So script ko I'm giving, I think I'm going to give it a 9. Yeah. 9. अब बात करी जाए डायरेक्शन की, मोहसिन. I think it's something that is very up his alley. It's very smooth. It's मुझे सिर्फ जो 2-3 चीज़ें overall I'm loving it. The 2-3 things that I feel that उस पर थोड़ा सा concentrate किया जा सकता था was Shaheera's makeup. I think at times it's looking like makeup. You know, a lot of the time it's looking like makeup. The other thing is when the wife gets beaten और बेटे के साथ बात करी, it was a lovely scene. और जब उसको वो जब अपने आंसू वाइप करती है ना, तो जिस आंख में मार खाए, you know, वहाँ उसको बस ऐसे कर, you know, you can't even touch the eye, it's so sore, because this area becomes very sensitive. I think that's something which should have been taken into consideration. But apart from that, that scene I really liked was when जब उसका miscarriage, when she loses her baby and she's sitting in the bathroom और उसका husband आता है उसके पास, and I thought that was very well acted and very well shot, and that feeling of the husband saying, no, I need you, you know, I love you, what is, you know, I thought that communication of the husband and wife came across really well. And then of course the consummation scene. Very lovely, very lovely. उर्दू में? हाँ? उर्दू में कैसे बोलेंगे? जब शादी की रात, असल शादी की रात, जो सीन सालगिरह पे जो हुई, हाँ सालगिरह वाली रात, हाँ बर्थडे गिफ्ट, हाँ बर्थडे गिफ्ट, या कह रहा अभी दिन खत्म नहीं हुआ, मैंने गिफ्ट नहीं दिया. I thought the softness, the way he's right behind her, you know, it's a little dark, then he comes into the light, and then it becomes a two-shot. I just thought it was very well done. I think every play has its ups and downs, but I will give him definitely an 8 for this. 8. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 22,100 हुए हैं, और मोहसिन अली के हिस्से में आखिरी बार से आए 1034. 5% बनते हैं, 0.5 इनको मिले हैं. अब बात कर ली जाए शाहिरा जलील की. मैया जी करेंगे स्टार्ट आपसे. Very fine actress. I think हमारे fraternity में a very good addition, a brilliant addition. Because अगर हम रज़िया को देखते हैं और फिर रज़िया के बाद you know ये हम देख रहे हैं जिसमें ये एक young mother है. She is a person who has come from a very difficult family, marries a much older man. This is also something which I feel that हम बहुत अरसे बाद older man younger woman relationship हम देख रहे हैं. काबली पुलाव. हाँ, काबली पुलाव के बाद हम देख रहे हैं. So I think that also, and also she is new, and then there's, you know, Adnan Siddiqui right opposite her. So you know there is, so I think she's handling herself very well. I think जो expressions उसकी तरफ से आ रहे हैं, she seems like a very mature actor. She doesn't seem like someone जो अभी you know कल ही आई है हमारे fraternity में. So she is very promising, and I wish her all the best for future projects also. So I'm going to give her 8.5. 8.5.
अब बात कर लीजिए अदनान सिद्दीकी की मरीना जी। अदनान आई थिंक रिसेंटली जो उसकी चॉइसेस हैं एंड हैव बीन ऑफ ऑल द रोल्स दैट ही इज डन, आई थिंक अपने एज ग्रुप में ही इज बीटन एवरीवन, ऑल ऑफ देम, ही इज लेफ्ट देम फार फार बिहाइंड, बिकॉज उसने ऐसे मज़े मज़े की चॉइसेस की और रोल्स किए, कैरेक्टर्स किए, एंड नॉट just something, solid roles, solid characters, you know, roles that your drama is depending on. And he's not scared of letting his hair grow. He's not, you know, he is a fearless actor जो अब हमें नज़र आ रहा है. And I think you have to give, meaning I want to give him a 10 just for that. Just for having the you know, gumption. To take on, you know, such, from negative to, खुशबुएं बस से खत, Oh, क्या बात है. amazing.